अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू पीरियडाइजेशन। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का ये लेक्चर है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीरियडाइजेशन है क्या? स्ट्रक्चर्ड एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग टू अलाउ द एथलीट टू मेक ऑप्टिमल गेन्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोड्यूस देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन की कॉम्पिटिशन्स विद मिनिमल रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग और इंजरी इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन. Previous research has also demonstrated that compared to periodized training programs result in greater increases in strength, power and sports performance. Periodized training programs के हमें ये तीन आउटपुट्स मिलते हैं, स्ट्रेंथ, पावर और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. Specifically, periodization involves the planned and structured variations in training type, volume में intensity और duration दोनों आ जाते हैं, and rest to achieve sports specific goals. This is achieved via the periodical progression of specific aspects of fitness within a specified time frame. This style of program allows for gradual and progressive overload, ensuring an optimal stimulus for adaptation whilst allowing the adequate time for recovery and adaptation. Progressive overload is essential in all aspects of physical training, whether the aim is to optimize performance, improve body image, or rehabilitate an injury. For example, subsequent phases may focus on basic anatomical and the functional adaptations, increased range of motion, increased tendon strength, improved coordination, and increased stability. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं फंक्शनल एडेप्टेशंस में. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, पावर एंड अल्टीमेटली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पीड एंड पावर. Such a progression requires appropriate adjustments in the frequency, intensity, and duration of individual training sessions and the appropriate selection of exercises, sets, and repetitions within each session. With this in mind, periods of training are divided into smaller, more manageable chunks that allow the athlete to maintain both physical and mental input throughout. ये हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग की फेजेस हैं. साइकिल हैं तीन तरह के, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल. साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैक्रो साइकिल में लार्ज ब्लॉक्स रिप्रेजेंट सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स. एग्जांपल, द ट्रेनिंग ईयर, अ होल ओलंपियाड. मीजो साइकिल का साइज मीडियम ब्लॉक्स हैं, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वीक्स और मंथ्स ऑफ द ट्रेनिंग. एग्जांपल में ऑफन विद अ स्पेसिफिक फोकस सच एज स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमल स्ट्रेंथ, पावर, पीकिंग, एक्टिव रेस्ट, एरोबिक इंड्योरेंस एंड एनारोबिक थ्रेशोल्ड्स. लास्ट इसकी टाइप है माइक्रोसाइकिल्स. साइज इसका होता है स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ टाइम, इंडिविजुअल ट्रेनिंग डे और वीक. मतलब अगर मंथ्स और ईयर्स हैं तो ये मैक्रोसाइकिल है, अगर वीक्स और मंथ्स हैं तो ये मेसोसाइकिल है, अगर डेज और वीक्स हैं तो माइक्रोसाइकिल. Mesocycle mesocycle interburst with periods of the reduced training to facilitate rejuvenation. Rejuvenation है process of giving new energy or vigor to something. Mesocycles can be structured to maximize the recuperative effect of the recovery periods and minimize the risk of overtraining. Many coaches use a 4-week cycle where the training load increases up to week 3 followed by an easier. मतलब week 4 में क्या होगा, पहले 3 हफ्तों में तो लोडिंग करनी है और लास्ट वीक 4th वीक में अनलोडिंग करनी है. क्यों अनलोडिंग करनी है 4th वीक में? ताकि फुल रिकवरी मिल सके. यूजुअली डिक्रीज इन वॉल्यूम बट नॉट इंटेंसिटी. दिस इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ शॉक ट्रेनिंग विद 4 वीक्स टर्म्ड ऑर्डिनरी. पहला वीक जो है, second week development, third shock or fourth recovery week. A mesocycle typically consists of 1 or 2 full 4-week cycles. ये वही 4 वीक मेसोसाइकिल के एग्जांपल जो कि हमने देखी भी थी. वीक 1 हमारे पास ऑर्डिनरी होता है, वीक 2 डेवलपमेंट होता है, वीक 3 शॉक होता है. अगर हम ग्राफ में देखें तो ग्रेजुअली हम क्या करें, लोडिंग ज़्यादा कर रही हैं. लेकिन अगर हम वीक 4 में देखें जो कि रिकवरी वीक होता है हमारा, उसमें हम लोडिंग कम कर रहे हैं लेकिन उसका ड्यूरेशन सेम ही है. ड्यूरेशन को हमने कम नहीं किया, इंटेंसिटी को कम किया. ये सेम 8 वीक्स मेसोसाइकिल है. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. और फिर अगर हम दोबारा से मेसोसाइकिल स्टार्ट करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट वीक से, फर्स्ट जो मेसोसाइकिल था उससे ज़्यादा हो रही है सबकी इंटेंसिटी. The training of speed, maximal strength, technique, and learning of the new skills should be emphasized during the early weeks of each 4-week cycle when the athlete is relatively fresh and receptive to such methods. During later weeks, the most trainable attributes will be cardiovascular endurance, anaerobic power, local muscular endurance, and speed endurance.
ट्रेनिंग ईयर क्या है, जिसकी एग्जांपल हमने मैक्रो साइकिल में की थी। द मोस्ट कॉमन मैक्रो साइकिल इज द ट्रेनिंग ईयर विच इन टर्न कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मीजो साइकिल्स एंड माइक्रो साइकिल्स। एवरी ट्रेनिंग ईयर कंसिस्ट ऑफ अ प्रिपरेशन फेज, परफॉर्मेंस फेज एंड रिकपरेशन फेज। रिकपरेशन वही रिकवरी फेज है, रेस्ट फेज जिसे कहते हैं। दिस गिव्स अ ट्रेनिंग ईयर विद 5 डिस्टिंक्ट फेजेस। पूरे साल को 5 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जनरल कंडीशनिंग पीरियड होता है, फिर स्पेसिफिक कंडीशनिंग पीरियड, प्री कॉम्पिटिशन पीरियड, कॉम्पिटिशन आ जाता है, परफॉर्मेंस पीरियड भी जिसे कहते हैं, और ट्रांजिशन या फिर रिकपरेशन पीरियड। अब हम देखेंगे वही 4 फेजेस जो कि ट्रेनिंग ईयर में होती हैं। फर्स्ट जनरल कंडीशनिंग होती है, जनरलाइज्ड कंडीशनिंग पीरियड। एम हमारा क्या होता है इस फेज में, टू डेवलप अ ब्रॉड बेस ऑफ फिटनेस इन्वॉल्विंग स्ट्रेंथ, पावर, लोकल मस्कुलर इंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड ड्यूरेशन, सेकेंड फेज स्पेसिफिक कंडीशनिंग होती है, और इसमें और इससे नेक्स्ट फेज है हमारी प्री कॉम्पिटिशन पीरियड। दोनों में हमारे एम्स क्या होते हैं, टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रॉड जनरल फिटनेस टुवर्ड्स द हाईली स्पेसिफिक फिटनेस रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन जब परफॉर्मेंस फेज, इसका जो एम है टू मेंटेन देयर हार्ड अर्नड फिटनेस, रिमेन इंजरी फ्री एंड पीक फॉर की कॉम्पिटिशन। लास्ट फेज ट्रेनिंग ईयर की ट्रांजिशन, जिसे रिकवरेशन पीरियड भी कहते हैं, टू अचीव फुल रिकवरेशन इन रेडीनेस फॉर द जनरल प्रिपरेशन पीरियड अहेड। जनरल कंडीशनिंग पीरियड, दिस पीरियड predominantly focuses on the strength endurance। endurance में 8 to 20 repetitions होती हैं, 3 to 5 सेट्स किए जाते हैं और 3 to 4 days per week, बट आल्सो इंक्लूड सम पावर एक्सरसाइजेज जिसमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है और टेक्निक वर्क है। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बोथ वॉल्यूम में प्राइमरी एम है ये हमारा, और इंटेंसिटी इंक्रीज करना सेकेंडरी एम होता है ट्रेनिंग का। स्पेसिफिक कंडीशनिंग और प्री कॉम्पिटिशन पीरियड में क्या किया जाता है, these phases provide progressive transition from broad general fitness towards the highly specific fitness. It can last from a few weeks through 2 or 3 months. Consist of a progressive increase in intensity and decrease in volume of training with a greater emphasis of sports-specific activities and skills, functional speeds, and actual sports practices. Competition period. The length of competition period varies for different sports। जैसे सॉकर है, ये 9 मंथ्स के लिए होता है। एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन पीरियड 3 to 4 मंथ्स का होता है। क्रिकेट का 5 मंथ्स का होता है। हाउ एवर द एम रिमेन दी सेम। कॉम्पिटिशन पीरियड में नेक्स्ट फोकस किया जाता है लोअर वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड पावर बेस्ड एक्टिविटीज़। 2 to 3 रेपिटेशंस की जाती हैं, 3 to 5 सेट्स और 3 to 6 डेज पर वीक डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉम्पिटिशन। लास्ट फेज है हमारी ट्रांजिशन, रिकपरेशन या फिर एक्टिव रेस्ट भी जिसे कहते हैं। दिस पीरियड यूजुअली लास्ट अराउंड अ मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट, the stresses of the previous competitive season and the timing of the next one. It is also a time of relaxation and enjoyment. The activities should be novel and fresh and not too demanding. Low volume, 1 to 3 repetitions, 1 to 3 sets, approximately 3 days per week. There are specific goals for each mesocycle of the training. Anatomical adaptations, these are usually addressed in the general conditioning phase. Hypertrophy, repetition of 8 to 20 and 50 to 80% one repetition maximum for 4 to 6 sets. स्ट्रेंथ की जाती है और पावर पे काम किया जाता है। पावर इन्हांस की जाती है बाय plyometrics and variations of the Olympic lifts. Difference between the sports, a track and field athlete may have 2 or 3 key competitions throughout the course of a 3-month competitive season. An English Premier football team may only have a 6 or 7 week preparation period preceding a 9-month competitive session, during which players are expected to compete a weekly or twice weekly basis. Swimmers often have major competitions arranged on 13 or 14-week cycles. Professional boxers may have between 3 or 4 fights a year. Application to the sports performance for athletes with limited training experience. The incorporation of periodization plan provides an excellent framework to develop an athlete's lift skills as well as their strength and power. Application to the rehabilitation. Developing lower limb control during bilateral and then unilateral exercises. Developing pain-free range of motion for a full depth squats while addressing a hamstrings to quadriceps ratio. Developing strength in squatting movements, progressing to a point that the athlete can correctly. Low intensity plyometric movements such as low level drop jumps should be practiced to ensure that the athlete has the appropriate toe placement, limb movement, balance and the posture. Appropriate foot placement, T is missing. Plyometric movements should be integrated, beginning with the primarily vertical movements followed by forward momentum, then lateral momentum, finally progressing to multi-directional movements which gradually become more sport specific. अगर हम समरी देखें इस पूरे लेक्चर की, तो
Although periodization has previously been used primarily by the strength and conditioning coaches to optimize performance for specific competitions, the same approach can be used in development of both rehabilitation programs and injury prevention programs. This approach ensures that athletes are appropriately conditioned prior to progressing onto the next, more demanding phase of their rehabilitation or training programs. Quite of the day, if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Thank you so much. नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।